Hello and welcome back to my channel DM Tricks Quality Education for Everyone. My name is DM Bage and today we'll be talking about gravitation. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं. Each of the forces deserve a separate video in itself because they are very interesting. So आज इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे. This is the most elusive of all the forces and today we'll talk about these things. There are three kinds of theories about the gravitation, which is Newtonian gravitation, which you're very familiar with. Then we'll talk about Einsteinian gravitation and then finally we'll be talking about quantum gravity. Quantum gravity को अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं गया है. There are so many scientists who are trying to understand these things but still this force has eluded all of them. बहुत सारे साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम ग्रेविटी इज़ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन फिज़िक्स. तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करेंगे. शुरू करते हैं हम लोग न्यूटोनियन पिक्चर ऑफ ग्रेविटी से, दैट व्हाट ही रियली थॉट अबाउट ग्रेविटेशन. सो ही सेड दैट द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन and mass is an intrinsic property of the matter. Then he gave a law about this thing. He said that every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between their centers. Right? So basically न्यूटन ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है. इट मीन्स वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. वेरी नाइस. एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस थिंग. अगर हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करें, सो इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज m1 एंड द अदर बॉडी इज m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r, देन द फोर्स विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. Force of gravity is equal to g m1 m2 by r squared. Right? Very simple. With this very simple law, Newton was able to explain so many terrestrial and celestial phenomena also. He unified the terrestrial motion and celestial motion with this very simple law. Let us see how. न्यूटन ने बोला सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने एक्सप्लेन करी वो ये थी कि the falling of an apple and the motion of the moon around the sun is the same thing. But the problem is apple directly falls to the ground, but the moon is orbiting around this thing. So he said कि moon भी earth की तरफ गिर रहा है, but simply it does not fall on the surface of the earth because it has some tangential speed. It is trying to move away from the earth also, and it is also falling downward with some velocity. This is an accelerated motion, right? Accelerated motion. Let us say that acceleration due to gravity is there. At that point is g. So it is trying to fall downward and it is also trying to move away from the earth. And due to the combined effect of both these motions, the moon does not fall on the earth. In this illustration, you can understand that if you project a projectile in this manner, अगर आप इस पे कम फोर्स लगाते हो तो प्रोजेक्टाइल फर्स्ट टाइम पे यहाँ गिरेगी. अगर आप थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गिरेगी. अगर थोड़ा और ज़्यादा तो ये यहाँ पे गिरेगी. इसी तरह अगर आपने इसे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दे दी तो इट विल अगेन कम बैक टू द सेम पोजिशन and it will again keep on going in the same path again and again and again. So it will continue to fall towards the earth endlessly. Right? सो एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जरूरी है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए. दैट वाज न्यूटन्स कॉन्सेप्ट एंड दैट वाज अ वेरी एलिगेंट कॉन्सेप्ट. राइट? सो अगर जस्ट इमेजिन करो कि मून की स्पीड सडनली ज़ीरो हो जाती है, सपोज इट हैपन्स बाय मैजिक, राइट, देन मून विल ऑल्सो फॉल टूवर्ड्स द अर्थ जस्ट लाइक एन एप्पल. दैट वाज न्यूटन्स आइडिया. वेरी नाइस, राइट? वेरी नाइसली एक्सप्लेन. So far, so good. Newton was able to explain these things quite successfully. He was able to successfully explain the terrestrial as well as great many celestial phenomena. But deep down, he had a little secret that he did not know anything about how does this gravity work. एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रही है विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? सो न्यूटन जानते थे इस बात को कि ही
cannot explain these things, and he was thinking about these things, but he could not come up with a solution of these things. And he did not tell the scientific community about this thing, about this little secret. And still, because his theory was quite successful in explaining so many terrestrial and celestial phenomena, his laws dominated in the scientific community for 200 years. And then after 200 years, there comes a scientist, Albert Einstein, जिसने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की पूरी बुनियाद ही हिला दी. So what was his idea? Let us try to understand. आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटेशन is the warp in space and time due to mass or energy. Gravitation is not the interaction between two particles by virtue of their mass, but it is the interaction of a massive object with the space and time. Very different idea, right? Okay, very complex. At first you won't be able to understand these things, but stay with me. I'll be explaining all of these things. अभी इतना समझो कि gravitation is the warping in the space. Whenever there is a warp in the space and time, that exactly is the gravity. Einstein said that the gravitational force is not acting between two particles, but the gravitational force of the object acts on the space and time, and that changes the shape of the space and time, and because of that thing, object moves in a curvilinear path. Let us try to understand this. In order to understand this theory, you need to understand the concept of space and time first. The space and time around a heavy object has some very different properties. अगर कोई lighter object होगी तो उसके around की space and time different होगी, और कोई heavy object के around space and time different होगी. Now we are talking about space and time and not just space only. Right? So we will talk about these things. Einstein said that space and time are not two different things, but they are the two aspects of the same thing, which is called space-time. न्यूटन का आइडिया ये था कि स्पेस अलग है, टाइम अलग है, बट आइंस्टाइन ने कहा you cannot think of them separately, just like heads and tails. They are the two aspects of the same coin. Similarly, space and time are the two aspects of the same thing, which is space-time. Let us try to understand this thing. He said that this space-time is something. अगर आप इस space-time को एक flat surface की तरह imagine करोगे, तो अगर कोई heavy object इस पर रखी जाती है, तो वो इस space-time को bend कर देती है, which is called warping. And because of this warping gives rise to the gravitation. This warping is called gravitation. Actually, there is no force acting between the particles or acting between two objects, but the warping of a space feels like gravity around the massive object. That is what gravity means. आइंस्टाइन ने कहा हल्की चीजें स्पेस को कम बेंड करेंगी और भारी चीजें स्पेस टाइम को ज़्यादा बेंड करेंगी. सो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल स्पेस को ज़्यादा बेंड कर रही है. Warping of space is a lot significant in the case of black holes. More warping takes place in the case of black hole because they are the heaviest object in this universe. A neutron star bends the space more comparatively more than the sun, and the sun also bends the space and time around itself. This is what gravity. So how does it explain the terrestrial phenomena that Newton was explaining, right? Let us try to understand these things. लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम. व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पेस, व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइम. तो चलो मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में कि स्पेस एंड टाइम होती क्या है. जस्ट इमेजिन कि ये पूरी यूनिवर्स है. अगर आप पूरे इस यूनिवर्स को इमेजिन करते हो एंड सडनली जस्ट इमेजिन कि एवरीथिंग हैज़ vanished from this universe down to every single atom and every single fundamental particle. अगर सारी की सारी चीज़ें एक साथ vanish हो जाए, what are we left with? आप बोलोगे nothing sir. That nothing is your space. Let us say this thing. This is your nothing, right? And this nothing is your space. This is nothing and this nothing is your space. This is called space. Newton imagined this space to be three-dimensional, something like this, right? And he utilized Euclidean geometry to specify the positions in this space, something like this.
आप एक ओरिजिन लेते हो एंड 3 एक्सिस को डिफाइन करते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस system, with this frame of reference, you can describe the position of any object in the universe, right? So he imagined this universe to be like this, three-dimensional picture of the universe. Let us try to understand Newton's concept about space and time. He said that space and time is real but they are not genuine. उनका मानना था कि space and time real तो हैं but they are not any physical thing. They do not have any kind of physical properties. Space and time are unaffected by events occurred in it. जो भी events हो रहे हैं इस space and time में, वो इस space and time की properties को affect नहीं करती. It means space and time will remain as it is. Before the beginning of the universe and after the beginning of the universe, the space was as it is. It is absolute. This is inflexible. और इस पे ये स्टेज की तरह एक्ट करती है. इस स्टेज पे परफॉर्मेंस होते हैं, दुनिया भर के कॉस्मोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं, जो भी होती हैं स्पेस में, वो फॉर ऑल दिस नेचुरल इवेंट्स दिस स्पेस सर्व्स एज अ स्टेज. एंड ही सेड दैट स्पेस एंड टाइम इज एब्सोल्यूट. इट मीन्स ये हमेशा से था और हमेशा से रहेगा. दे कैन नॉट बी चेंज्ड. दे विल ऑलवेज रिमेन द सेम. दैट वॉज न्यूटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम. इट मीन्स अगर ये 3-डायमेंशनल स्पेस है, अगर मैं इस स्पेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो भी ये स्पेस की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रही है. बट आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था. ही सेड दैट स्पेस एंड टाइम आर नॉट ओनली रियल बट दे आर जेन्युइन ऑल्सो. इट मीन्स स्पेस एंड टाइम आर वेरी वेरी रियल एंड दे हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दे इंटरैक्ट विद द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. जस्ट सी दिस थिंग. इमेजिन अर्थ. अगर आप अर्थ को रख दो इस स्पेस एंड टाइम में, तो यू विल सी दैट कि अर्थ के अराउंड ये ग्रिड 3-डायमेंशनल स्पेस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. इट हैज़ बिन डिस्टोर्टेड, इट हैज़ बिन वार्प्ड. दिस वार्पिंग इज द ग्रेविटेशन. दैट वॉज आइंस्टाइन्स आइडिया अबाउट ग्रेविटेशन. ही सेड दैट स्पेस एंड टाइम आर अफेक्टेड बाय द मोशन एंड एक्शंस अकर्ड इन इट. कोई भी एक्शन इस यूनिवर्स में होती है तो वो स्पेस एंड टाइम को अफेक्ट करेगी, बिकॉज space and time are physical things. They are affected by the presence of other objects in it. Space is flexible. It can change, right? It does not have a fixed value. It is not rigid, which was Newton's concept. Newton said that it is non-flexible, inflexible. कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आए चाहे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. It will still remain the same thing. Time is changeable. न्यूटन ने कहा था कि टाइम कांस्टेंट होती है. टाइम ऑलवेज फ्लोज एट द सेम रेट. आपके 24 आवर्स और मेरे 24 आवर्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल. न्यूटन ने यही कहा. बट आइंस्टाइन ने क्या बोला? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सपोज 2 प्लैनेट्स, इमेजिन करो ए एंड द प्लैनेट बी. अगर आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप एक मैसिव प्लैनेट में 4 घंटे स्पेंड करते हो तो ऐसा हो सकता है कि ये सपोज ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर 10 साल बीत चुके हैं. ऐसा भी हो सकता है. इट मीन्स टाइम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. टाइम इज़ रिलेटिव. टाइम इज़ रिलेटिव, स्पेस इज़ रिलेटिव. दैट इज़ व्हाट आइंस्टाइन वाज ट्राइंग टू से. टाइम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. आपके 24 आवर्स और मेरे 24 आवर्स दे मे बी डिफरेंट. Space and time are relative. He said this thing. Space behaves like a stage, but it is not rigid. Space is not rigid, right? It can be bent, it can be warped. So space has physical properties. Space and time should be considered together. You cannot look at them separately, but you should treat them as the two aspects of the same thing, which is now known as space-time. न्यूटन ने बोला था कि स्पेस और टाइम अलग होती हैं. स्पेस एंड टाइम. ही सेड स्पेस एंड टाइम. ही डिड नॉट से स्पेस टाइम. आइंस्टाइन ने बोला स्पेस एंड टाइम को आप अलग नहीं कर सकते, उसको आपको एक साथ देखना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्पेस टाइम, राइट? आप इसे ऐसे समझो कि सपोज यू टेक आउट एवरीथिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स एंड देन द स्पेस टाइम विल बी लेफ्ट. और ये स्पेस टाइम एक फ्लैट सरफेस की तरह होगी. अगर इस फ्लैट सरफेस पे आप कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रख देते हो तो वो इसे बेंड कर देगी, वार्प कर देगी, एंड दैट वार्पिंग इज़ द ग्रेविटेशन. और जब हेवियर प्लैनेट्स मूव करेंगी इस यूनिवर्स में
तो वो अपने साथ स्पेस टाइम को भी बेंड करती जाएंगी. इट मीन्स स्पेस टाइम हैज सम प्रॉपर्टीज. दे आर अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द heavier objects. They interact with the particle. So Einstein is saying that gravitation is not the interaction between two particles or the two objects, but it is the interaction of the particle with the space-time fabric. That is what we call as gravitation. There are so many demonstrations to illustrate the general theory of relativity. You can imagine general theory of relativity as a flat trampoline. अगर आप एक ट्रैम्पोलिन को इमेजिन करें तो अगर इस पर कोई हेवियर ऑब्जेक्ट आप नहीं रखते हो तो ये फ्लैट रहेगी. अब इस फ्लैट सरफेस पे अगर कोई मोशन हो रही है, अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो इट विल गो इन ए स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक दिस थिंग. अगर एक फ्लैट सरफेस को आप इमेजिन करते हो, अगर फ्लैट रिजिड सरफेस को इमेजिन करते हो, तो यहाँ पर अगर आप एक बॉल को रोल करते हो तो ये बॉल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी. फाइन. अब आप इमेजिन करो कि आप इस ट्रैम्पोलिन में एक हेवियर ऑब्जेक्ट रख देते हो. नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन प्रिडिक्शन दैट दिस स्पेस टाइम इज फ्लेक्सिबल. दिस इज नॉट रिजिड लाइक न्यूटन. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट द रिजिड स्पेस टाइम हैज बीन शोन. रिजिड स्पेस टाइम. It means the presence of other objects in the universe does not affect the space-time. It does not interact with the space-time. It remains absolute. ये हमेशा से ऐसी थी और हमेशा से ऐसी रहेगी. That was the idea of Newtonian gravity. But according to general theory of relativity, ये space and time, that this space and time interacts with the presence of the objects in it. अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट आप रख देते हो इस स्पेस एंड टाइम में तो वो उसके अराउंड बेंड हो जाती हैं, कर्व हो जाती हैं. एंड दिस कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम गिव्स राइज टू द फीलिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इल्यूजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल एज सच. इट इज द बेंडिंग ऑफ द स्पेस एंड टाइम दैट गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, द मिस्टीरियस फोर्स. बट आइंस्टाइन ने डायरेक्टली ये बोला कि दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स. न्यूटन ने ये कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स. आइंस्टाइन ने बोला ऐसा नहीं है. एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, बट एवरी ऑब्जेक्ट बेंड्स द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट कम्स अराउंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, then that object will also feel the bending of that curvature of the space, and that would give you an illusion of the gravitational force. The bending of the space gives you the illusion of the gravitational force. That was Einsteinian idea. So let us try to understand this thing. In the first picture, Newtonian gravity has been shown. So उन्होंने बोला था कि space time rigid होती है तो ऐसी होगी. अगर आप इस पर सन रख दो तब भी ये ऐसी ही फ्लैट रहेगी. और सेकेंड पिक्चर में आप देखते हो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि वो फ्लेक्सिबल होती है. तो अगर सन होगी तो वो उसके आसपास का स्पेस बेंट होगा, राइट. सो नाउ इमेजिन द मोशन ऑफ मर्क्यूरी. हियर द मोशन ऑफ मर्क्यूरी gave us the first clue about the general theory of relativity, because Newton's theory of gravitation was not successfully able to explain the motion of Mercury. It was able to explain the motion of other planets very successfully, but there was something wrong with the motion of Mercury. It was not able to explain it properly. What was wrong in it? Let us try to understand this thing. उन्होंने बोला था कि अगर किसी planet को आप isolate कर देते हो solar system में तो it will take a perfect elliptical path. But according to general theory of relativity, Mercury, even if you isolate it from the other planets, suppose there are no other planets but Mercury around the sun, even then the Mercury will not take the perfect elliptical path. It will still move in the motion something like this. Elliptical path. It means this point which is called perihelion. Perihelion, the closest distance to the sun. This point will be shifting in a particular direction. You can see this thing because of the motion of the Mercury is very different according to the predictions of general theory of relativity, and this is called precession of Mercury. Let us try to understand this thing.
The precession of Mercury gave us the first clue about the validity of general theory of relativity over Newtonian mechanics. Let us try to understand this thing. According to this thing, what is the precession of Mercury? It is simply the shifting of perihelion. Precession of Mercury means shifting of perihelion. What is perihelion? The closest distance from the sun. Closest distance from the sun. So why is the shifting taking place? Newton was also aware about this precession of Mercury, but he was not able to account for a little discrepancy in the calculation. Just see this thing. According to the observed value, अगर आप experimentally observe करते हो precession को, it was very much clear because we already had the measured values, very accurately measured values of these things, which gave us an idea about the precession of the Mercury, that Mercury की orbit precess कर रही है. It means पहले आपकी पेरीहेलियन यहाँ थी, अब वो यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी. So gradually it precesses around the sun in a particular direction. And by how much you can calculate the angle between these things, and this angle theta is around, you can see this thing, this is the theta. Theta is around 5600 minutes per century. तो 100 साल में इतना डिफरेंस आ जाता है इसके पेरीहेलियन के पोजीशन में. इट मूव्स बाय दिस मच ऑफ एंगल इन 100 years, इन 1 century. सो आपको ये पता ही होगी कि 1 minute इज इक्वल टू व्हाट, 1/60th of 1 degree is called 1 minute, and 1 second is called 1/60th of 1 minute. This is sexagesimal system. Sexagesimal system. यहाँ पे हम लोग ऐसे बात करते हैं, just like the angles we talk about. Similarly, डिग्री से आप फेमिलियर हो, जस्ट डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो 1 मिनट होगी. 1 मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड. राइट. सो 5600 seconds per century. सो 100 सालों में 5600 seconds per century का डिफरेंस आता है. द perihelion of Mercury precesses by 5600 seconds per century. But the calculator, न्यूटन ने बोला कि ये precession क्यों हो रही है. उन्होंने बोला कि क्योंकि due to the presence of other planets are affecting the path of the Mercury, and that gives rise to the precession of Mercury. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, अगर आप कैलकुलेट करोगे प्रिसेशन को तो ये आपको ये देती है वैल्यू 5557 seconds per century. There is a discrepancy of around 43 seconds per century, which Newton was unable to explain. आइंस्टाइन ने बोला ये प्रिसेशन अदर प्लैनेट्स की वजह से नहीं हो रही है, but this is happening because of the curvature of the space and time. Because Mercury is closest to the sun, so the closer we go, the more bent the space and time would be. And this warping of the space and time will be more significant as we go closer and closer to the sun. Since Mercury is the closest planet to the sun, this will be most affected planet because of the curvature of the space and time. And that is giving rise to this discrepancy. And then we calculated the value according to the predictions of the general theory of relativity, and everything fell into the right place. It was successfully explained that what is the cause of this discrepancy. Einstein की general theory of relativity ने successfully explain कर दिया कि what is giving rise to this discrepancy, and there was no discrepancy in Einsteinian picture of the gravity. So general theory of relativity is more valid than Newtonian picture. This is a better and more accurate picture of the universe. Let us try to understand Einstein's general theory of relativity with an analogy.
और इस एनालॉजी से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ डज आइंस्टाइंस ग्रेविटी वर्क्स इन द स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्लैनेट्स आर मूविंग इन एन इलिप्टिकल पाथ. That is the prediction of general theory of relativity and the prediction of Newtonian picture of gravity also. But how do you explain the falling of an apple? अगर मैं एक ट्री इमेजिन करूँ, एक एप्पल यहाँ पर है, तो एप्पल फॉल करती है क्योंकि न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, राइट. आइंस्टाइन बोलते हैं कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है, देयर इज नो ग्रेविटी एक्टिंग. देन व्हाई डज एन एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ? दिस इज योर अर्थ सरफेस. राइट, न्यूटन ने तो बोला कि उस एप्पल पे एक फोर्स लग रही है एंड दैट फोर्स इज ट्राइंग टू पुल इट डाउनवर्ड एंड देयरफॉर एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड. राइट, दैट वाज न्यूटन्स पिक्चर ऑफ द ग्रेविटी. आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि एप्पल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस टाइम पे लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती है. देन व्हाई डज एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपने ये मौत का कुआं तो देखा ही होगा. मौत का कुआं, इसके सेंटर को आप इमेजिन कर लो कि ये सन है, राइट. और ये जो कार्स आप देख रहे हो, दे आर प्लैनेट्स. All these planets have a speed, tangential speed, right? अगर they all have this tangential speed, अगर इनकी tangential speed 0 हो जाए तो क्या होगा? ये डायरेक्टली सन की तरफ नहीं गिरेंगे, गिर जाएंगे, राइट. That is what happens. Because the space time around the sun is bent, which is not flat anymore. So if you want to move on this bent surface, then you must move at a particular speed. That is your orbital speed, right? Without orbital speed, you will directly fall towards the sun. That will happen. That is what happens. That is why the planets are moving around the sun like this, right? Now, why does an apple fall then? Apple भी एक bent space, and apple, the natural tendency of apple is to fall towards the ground, क्योंकि अर्थ के आसपास की स्पेस टाइम बेंट है, एक फ्लैट सरफेस है. सो एक फ्लैट सरफेस में एक बेंट सरफेस में अगर आप किसी बॉल को रखोगे तो नेचुरली द बॉल विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉल डाउनवर्ड, राइट. सो वो बॉल की नेचुरल टेंडेंसी है, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम. इट विल naturally try to fall down, but something is stopping it from falling, and that something is the electromagnetic force. ये अभी भी पेड़ से attached है. It means molecules of this apple are attached with the tree. It means an electromagnetic force is acting on it. Electromagnetic force is acting on it in the upward direction, right? So electromagnetic force is something that is holding the apple in its place. Otherwise apple का natural tendency तो अर्थ पे गिरना ही है, क्योंकि वहाँ का space and time bent है. Now did you get the picture of the gravity? I think you got it, right? So this is how we imagine, this is how the Einsteinian picture of gravity works. Now let us talk a little about quantum gravity. मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि this is the hardest problem in physics that the physicists are dealing with, and this is still unresolved. We still have no clue about this force, that what is giving rise to this quantum gravity. How does gravity work at the quantum level? We don't have any idea about this thing. But still we believe on one theory that there is a particle called graviton. Because at the quantum level, मैंने last video में भी बताया था कि at all the fundamental forces come into existence because of the exchange of certain exchange particles, certain gluons. By the exchange of gluons gives rise to the fundamental forces, and exchange of graviton gives rise to the quantum gravity. But still this graviton has not been detected. So we have no clue about this thing, right?
The reason is that this gravitational force is so weak that we cannot detect it in any advanced experimental setup on the earth. हमारे पास जो सबसे एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो LHC है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, हुज डायमीटर इज़ अराउंड 27 किलोमीटर. अगर हम लोग एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाते हैं जिसकी डायमीटर 27 लाइट ईयर्स भी होना, तब भी we cannot say it for sure that we would be able to detect the existence of graviton, because gravitational force is very weak, very weak in nature. You know that it is 10 to the power 36 times weaker than the electromagnetic force. So such a weak force cannot be detected in any large hadron collider. But maybe there are some other ways by which we can find out the existence of this graviton. So with this thought, I will leave you here. See you in the next video with some other force. Till then, goodbye and happy physicsing.